With this, we move on to our next panel discussion, which is the districts in India 2047. Recently, Prime Minister asked districts to develop a long-term vision to make India a developed nation by 2047. This included the districts to take financially prudent decisions, which will make them fiscally strong and capable of delivering programs that meet the dreams, aspirations, and welfare of citizens. This also means adoption of next generation administrative reforms to bring the citizen and the government closer. It is essential to combine the vision of states and districts with the national vision to reach the goal of a Viksit Bharat, or a developed India by 2047, wherein skills, health, women empowerment, farmers' welfare, infrastructure development will play a prominent and a key role towards growth, but they also remain a challenge. It's important that we look at the emerging technologies that are likely to play a pivotal role in reaching out to people and improve services delivery. To discuss this, we are joined by Mr. Siddharth Shankar Swain, Collector, District Administration, Angul, Odisha, Mr. S.P. Bhagora, CEO, Dahod Smart City Development Limited and Regional Commissioner of Municipalities, Vadodara, Mr. A. Hirani, Additional District Magistrate from Purulia, Zilla Parishad, West Bengal, and Mr. Yashpal Ahuja, UIT Secretary, District Administration, Bikaner. So we'll welcome to all the panelists to the discussion. We will divide the discussion over 3-4 questions. Let's have the question 1 and go around everyone, taking their inputs 2 minutes each. Let's take all of us and then move on to the next. So my first question is, there is a steady rise in the number of working age population, but the job creation has remained flat. How to unlock the demographic dividend, which is a major challenge at the district level? So let me first ask Mr. Siddharth Shankar Swain from Odisha. Over to you. Mr. Swain. Hello. Namaste. I am representing Angul district on behalf of Shri Siddharth Shankar Swain sir. I am the environment consultant to the district and mineral fund. Yeah. Yes, sir. I just missed the question, sir. Can you please repeat? Yeah, so there's a rise in the number of working age population, in fact, which is what we call demographic dividend. But the job creation has not kept pace. It has remained flat. So how to unlock the demographic dividend at the district level? How to create opportunities? Yeah. So taking example of our districts, it's a mining affected and industrial affected district. So there is a huge displacement or rehabilitation and resettlement issues. So there is a huge requirement of skilling in that sense, because these are new kind of jobs that is not traditionally available in the district, but in the advent of new kind of job descriptions, they need to be. We have done, especially in our case, we have strategized the available fund that is there with the industries and also the mineral fund to create a roadmap for next 5 years in a short-term basis and the next 10 years in a medium-term basis to make them available with the adequate skill ecosystem, which will enable them to aspire for better jobs, better roles. Also, make a culture of aspiring for a better job and opportunity. In that sense, the gap will be maintained because the existing gap can only be fulfilled with available skilling and capacity building plan. Thank you. Mr. Bhagora, who is the CEO of Dahod Smart City Development and Regional Commissioner. Let me make an introduction to you. As Regional Commissioner, Vadodara Zone, you manage 26 Nagar Palikas like Anand, Nadiad, Dahod, Jhalod, Devgarh, Baria, and so on.
Along with that, you also hold the additional charge of CEO Dahod Smart City, and under your leadership, Dahod has achieved many milestones, not only by uplifting city infrastructure, but also by continuously keeping the balance between the new projects and the sentiments of the citizens. So I'm sure this also bothers you when it comes to the creation of opportunities for to absorb the demographic dividend. Over to you. मैं यहाँ दाहोद डिस्ट्रिक्ट ये गुजरात का ट्राइबल पॉपुलेशन यहाँ सर 75% ट्राइबल पॉपुलेशन है और यहाँ सर वो मजदूरी के लिए सर दाहोद डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं वो सिटी एरिया में जो कंस्ट्रक्शन काम के लिए जाते हैं और खेत मजदूरी के लिए जाते हैं, तो यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर माइग्रेशन। और माइग्रेशन के साथ यहाँ के उसके जो बच्चे को साथ लेके जाता है तो एजुकेशन का भी प्रश्न है सर। तो वो सर अभी जो माइग्रेशन कम करने के लिए और उनकी जो आमदनी बढ़ाने के लिए यहाँ स्टेट गवर्नमेंट की ओर से सर हर एक विलेज में मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के सभी को जो दूध कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो भर के उनकी इनकम करने के लिए की जो कार्यवाही है वो सर स्टेट की ओर से चल रही है सर। मैं आपके पास वापस आता हूँ। Let me invite Mr. Adityavikram Hirani, who before joining the IAS was IPS 2017 batch, Maharashtra cadre. Was earlier assistant magistrate and district assistant collector, North 24 Parganas, followed by OSD to Chief Secretary, West Bengal. Along with Zilla Parishad, he is looking after sanitation, departments of agriculture, animal resource development, public health engineering, among others. So let me, Mr. Hirani, ask you the same question, that how is it that you are looking at unlocking the demographic dividend and the efforts being made at the district level? Thank you very much. And as you clearly mentioned, the demographic dividend of India has presented itself as a very big opportunity, but sadly the job creation has at the very best flatlined. So two particular solutions given the present scenario in which we are in come to my mind. First is, at the district level, we'll have to look at new avenues and disruption of the old methods. By this, I mean that earlier the job creation arena was that you skill somebody, you train them, you create the opportunities for their absorption in the present systems, and that is how you skill a person and make provide daily livelihood to him or her. At present, this particular strategy has reached its peak and it has started giving diminishing returns. Presently, what we can do is tap into the niche productivity of each and every district. I come from Purulia, and from experience, I'd be able to tell that my agroclimatic condition is not very favorable, but it allows us to grow certain niche products which are not so much possible in the other parts of the country. So what we try to tap into this potential by training the male as well as female SHG groups into cultivation of various niche products like lac, mushrooms, 3 to 4 varieties of mushrooms, and other forest related produce. So we are tapping into the natural inclination of the geography in which we are. Along with that, we are also not deviating the local populace very much from what they are habituated in. Secondly, even though the traditional market has flatlined, a new market has emerged, and this has created an immense opportunity. I'm talking about the utilization of technology and the tapping of the e-markets. Thanks to the merger of various localized markets into one big, huge market at the national and perhaps at the international level, I believe that any small product manufacturer across the country has an access to each and every nook and corner of the country thanks to the e-marketing system in which we are. This particular market can be tapped by branding the product, working a little bit on quality monitoring, and then
investing heavily on e-marketing as well as making the product known across the country. Also, I would like to point out a very new update in the job scenario. Essentially, we are looking at the demographic dividend. We want to provide them with provide the gainful employment as well as allow them to have good income. And at present, the vlog or the video log industry is booming up like anything, and various areas, like the topic is districts in for 2047, various districts can engage, can, as a matter of their plan, as a part of their district plan, can engage certain people of certain nook and corner of their district in this particular industry of video logging, which has surprisingly given a lot of returns to a lot of people. And as we all know, that consumption of data and utilization of smartphones is something which is across the country. So I think it's a market which remains untapped, and gainful employment can be generated without any further investment as well as investment of time and energy in skilling. Thank you. Thank you. I now invite Mr. Yashpal Ahuja, UIT Secretary, District Administration, Bihar. Prior to this, he worked as registrar at Bikaner University for 1 year and 1 year as Deputy Inspector General, Registration and Stamps. He was also SDM for over 5 years, having widespread exposure to the way the districts work. In fact, being the most important unit in governance, my question to you is, how important is it to have data-driven insights into the level of social, financial, and digital progress in the districts? How are you leveraging it? Kindly, can you repeat the question, please? How important is it to have data-driven insights about the level of social, financial, and digital progress in the districts on all these indicators, and how are you leveraging it? इस बारे में सर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहला हमारा इशू है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट के बारे में है सर। स्टेट लेवल पे जो इश्यूज क्रिएट हैं उसमें जो डेटा के लिए फ्लो करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थिंग है कि वो है इंफ्रास्ट्रक्चर में फाइबर केबल्स भी हैं और टेलीकॉम नेटवर्क भी है, और वहां तक की जो है मोबाइल या इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी एक इशू है। राजस्थान एक बड़ा स्टेट है सर, और एक बड़ा स्टेट होने के कारण इसमें मोस्टली सबसे बड़ा ज्योग्राफिकल स्टेट है, सबसे बड़ा, और जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं बहुत सारे, जैसे बीकानेर और जैसलमेर, जिसमें इन दोनों को मिला दें तो पंजाब स्टेट से भी बड़ा ये दो डिस्ट्रिक्ट बन जाते हैं। तो डेटा कैसे अंतर तक जाएगा इसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट काफी कॉन्शियस है सर। 5G टावर के बारे में भी जो बाकी स्टेट्स जहाँ टावर पहुंचे नहीं है, राजस्थान गवर्नमेंट ने 5G की टावर पॉलिसी बनाई है। पहले जो 2G या 3G में टावर्स के पॉलिसी थी उसमें लोगों को पावर थे ऑब्जेक्शंस करने के, वो 5G में रिमूव कर दिए। अब डाटा ज्यादा से ज्यादा जगह जा पाए, फाइबर केबल तक लोगों की ज्यादा नेटवर्क तक रीच हो सके, उसके लिए रूल्स का जो है काफी सिंप्लीफिकेशन किया है। 2017 में एक नोटिफिकेशन जारी करके फीसेस को भी रिस्ट्रक्चर किया है, और जितने भी डेटा पहुंचाने के लिए जो बेसिक्स जो एप्लीकेशंस थी उनको भी रूट करके एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट कर दिया है, जहां कोई भी डाटा केबल ऑपरेटर या टेलीकॉम स्ट्रक्चर या फाइबर केबल से जाने वाला या लोकल केबल वाला, उन सबको एक सिंगल पोर्टल पे अप्लाई करना है। उसकी मॉनिटरिंग काफी स्ट्रिक्ट होती है, और उनकी फीसेस का भी रिस्ट्रक्चरिंग काफी सिंपल किया है, ताकि, और दूसरा जो केबल या फाइबर केबल डालने के लिए रोड कटिंग की परमिशन है उसे भी इस नेटवर्क पोर्टल में अपडेट किया है, ताकि कोई भी एप्लीकेशन या सर्विस प्रोवाइडर है उसे जगह जगह भटकना नहीं पड़े। देखा ये जाता है कि कोई भी सर्विस प्रोवाइड कराने वाला, उसे अलग अलग जगह से NOC लेनी पड़ती है, उसे कभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, कभी UIT डेवलपमेंट अथॉरिटी से, कभी इंडस्ट्री से, कभी डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से। तो उन सबको कंबाइन करके एक ही पोर्टल में कंबाइन कर दिया है। उसी में ही इंजीनियरिंग ब्रांच के लोग इन्वॉल्व हैं, उसी में फाइनेंशियली
अगर उनसे रिलेटेड कोई फीस लेनी है, वो इन्वॉल्व है, तो वो उसकी मॉनिटरिंग क्लियर है कि कितने डेज में इनकी पेंडेंसी क्लियर होनी चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके उनके वहां तक लेकर के जाएं। अभी जैसा अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब का एक जो इनिशिएटिव था, उसमें इन्होंने किया कि जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ जहां पर टीचर्स नहीं है, क्योंकि रूरल स्कूल्स हैं वहाँ टीचर्स की पोस्टिंग या तो कम है या टीचर्स जो स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग नहीं है, वहाँ डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड करने का एक इनोवेशन किया है विद द हेल्प ऑफ भामाशाह, मीन्स डोनर्स। भामाशाह राजस्थान में एक डोनर थे राणा प्रताप के समय में, उनके नाम से हर डोनर को भामाशाह के नाम से बुलाया जाता है। तो विद द हेल्प ऑफ भामाशाह सभी ऐसे स्कूल जहां पर बिना टीचर्स के या कम टीचर्स के स्कूल थे, वहां एक क्लासरूम डिजिटल क्लासरूम बना दिया कि जिसमें जिस पीरियड में टीचर नहीं है या वो स्कूल जो बिना टीचर के हैं, उन्हें हमने एक डिजिटल एजुकेशन देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू विद प्रॉपर हार्डवेयर उन्हें प्रोवाइड किया है, और उनके साथ में जो शिक्षा विभाग ने अपनी हर चैप्टर की स्लाइड्स तैयार की हैं और वीडियोस तैयार की हैं, वो हमने उन्हें प्रोवाइड कर दी है, ताकि कोई भी बच्चा एक क्लास में ब्लैंक नहीं रहे और उसकी एजुकेशन कंटिन्यू होती रहे। तो वो टीचर या वो सब्जेक्ट टीचर जो नहीं है, उसकी अब्सेंस में भी जो एजुकेशन आगे बढ़ती रहे। तो इस तरह से जो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर गांव तक जा सके, और हमारी तरफ से ये इनोवेशन है कि हर अब आज की स्थिति में ये आज का एक भी गवर्नमेंट स्कूल बगैर डिजिटल टीवी के हमारा बाकी नहीं रहा है सर। धन्यवाद। Sir. Mr. Hirani, I would like to pose this question to you, that how are you leveraging on data governance? What are the specific steps that you're taking? How are you implementing it? I'm sorry, can you come again, please? Yeah, so how are you looking at data governance, and in your district, have you made any progress there? How are you leveraging it? Data governance, data-driven governance. So, yes, yeah. So, the government of India as well as the government of West Bengal have taken various strides regarding, first of all, identifying and acknowledging the importance of data, and secondly, utilizing it to increase the impact of administration as well as its reach. As far as my district is concerned, first of all, what we have done is we have made a convergence mechanism. This is what I feel is a problem across the 640 odd districts in India, where the departmental bifurcation causes every department to work in silos. This results in a lot of duplication of job, as well as it also does not bring out a clear picture as far as the district magistrate is concerned, because we are all aware that the central government has acknowledged the model of PM, CM and DM. And since the district magistrate is the cutting edge from a Hawkeye's point of view, that is a chair which should know the overall impact of policies and programs and schemes implemented by various departments. So what we have done is we have made a convergence mechanism wherein at a single platform, both geographical representation as well as the written representation of whatever works have been done are integrated at one place, and then they are presented. And once we have that particular, it seems to be a very very conventional and very non-intuitive thing to do, but it has created a lot of impact, because once you have an Hawkeye's view of what sort of interventions have been done at the district level, this gives a very clear picture that so and so area is lacking in the initiative of so and so department, and thus a district magistrate as the authority in the district can direct and channelize the energies in that direction. Secondly, collective platform wherein the social capital of the people across the district is used, and as I mentioned in my previous point,
having a smartphone in your hand is now a common thing, and we can make these individuals the eyes and ears of the district administration, wherein data can pool in from their end, so that a lot of expenditure which in these times is not necessary, like as in survey for a particular scheme, or moving across in the district to recognize the needful areas. We can have a very well created data bank at the district level, wherein it is basically the pooling of information, demands, necessities from across the district by the people of the district, also the people coming or the migrants. We have a very important tourist place, and in our portal, complaint was lodged that this particular area could do better, this particular tourist place could do better with a common sanitary complex. And as in charge of sanitation, I was happy to receive that input and that data, which I otherwise could not have had. And we were able to provide with the intervention which was required. So data and information in this age is very valuable, and it can reduce on various redundancies which we still practice in the district, and it can make the administrative interventions more focused, as well as the effectivity and efficiency of our interventions can also increase. Thank you. Thank you. Mr. Bhagora? जी, मेरा सवाल वही था कि आप जो डेटा ड्रिवन गवर्नेंस है, आप उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लेवरेज कर रहे हैं, ताकि जो प्रिपेयर्डनेस है, जो सर्विसेज हैं, वो सब इंटीग्रेट हो पाएं, जो कि आप दूसरे पैनलिस्ट बोल रहे हैं कि साइलोज में डिलीवर किया जाता है, तो कैसे उनको इकट्ठा किया जाए? तो ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, हाउ आर यू डूइंग इट? आप कैसे कर रहे हैं इस चीज को? अभी सर यहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट की ओर से हर डिपार्टमेंट का जो लाभार्थी है उनका डेटा लिया जाता है। जो हेल्थ का है तो वो चाइल्ड क्या जो एज है वो कौन सा रेड जोन में है, येलो जोन में है, उसका सर पूरा डिटेल वो चेक करके उनका डेटा ऑनलाइन किया जाता है। और गवर्नमेंट की जो स्कीम है उनका डेटा हर डिपार्टमेंट की ओर से लिया जाता है, और उनके हिसाब से कौन सी फैमिली ने गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम का जो लाभ लिया है उनका भी डेटा एनालिसिस किया जाता है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट की ओर से हर एक फैमिली का जो डेटा है वो डेटा लेके उनके हिसाब से उनके ऊपर जो सर हेल्थ रिलेटेड जो बच्चा है उनको जो फैसिलिटी की जो जरूरत पड़ती है, तो हॉस्पिटल में जो सारवार देने की जो जरूरत पड़ती है, तो उनको हिसाब जो डेटा है उनके हिसाब से सर उनको फैसिलिटी दिया जाती है। तो अगर मैं ये आपसे पूछूं कि आपके चैलेंजेस क्या हैं, तो आप क्या बताएंगे? कठिनाइयां, चैलेंजेस क्या हैं? तो यहाँ सर दाहोद डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से तो जो सर एरिया जो ट्राइबल एरिया है उनके हिसाब से ज्यादातर फैमिली माइग्रेशन होके गुजरात के और एरिया जो सिटी एरिया अहमदाबाद है, सूरत है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट में जो वो मजदूरी के लिए चले जाते हैं। और खेती के लिए भी सर और जो सौराष्ट्र है, जूनागढ़ है, वहाँ वो फैमिली 5-6 महीने के लिए चले जाते हैं। तो इसके लिए सर उनके वो कॉन्टेक्ट के लिए और वो जो मेन चैलेंजेस है, और उसका सर जो हेल्थ का भी इश्यू है, जो कंस्ट्रक्शन साइड पर जो लेबर रहते हैं तो उसको जो फैसिलिटी के उनके हिसाब से उनका जो मेन चैलेंजेस है सर यहाँ का माइग्रेशन के रोजगारी के लिए। यशपाल जी, व्हाट आर योर रेजिडुअल चैलेंजेस? सर चैलेंज जो है वो अनइक्वल डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज है सर। जैसे अगर राजस्थान स्टेट की बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज पानी है सर। पानी जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है सर। हमारे जोधपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें हर एक घर के नीचे पानी के कुंड बने हुए थे, क्योंकि पूरे साल में सिर्फ बारिश का ही पानी आता था और उसको वो स्टोर करके रखते थे। उसके बाद में 1970 के बाद में कैनाल स्टार्टेड हुई, और उसके बाद में हालांकि उस समय पॉपुलेशन लिमिटेड थी, उनके यूजफुल थी, लेकिन अब पॉपुलेशंस इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो पानी अपर्याप्त है। तो वो पानी जो है सिर्फ लिमिटेड क्वांटिटी में मिल पा रहा है, वो भी सिर्फ सिटीज में।
सिटीज में भी वहां पर जहां पर स्टोरेज करने की फैसिलिटीज है, और रूरल एरिया में पानी का नेटवर्क कम है, वो मुश्किल है उनके लिए पानी को पहले तो निकालना, और उसके बाद में वो पानी इस लायक नहीं है कि पिया जा सके। बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स में फ्लोराइड की पानी की मात्रा इतनी है, इतनी ज्यादा है कि वो फ्लोरोसिस हो रहा है। दूसरा जो चैलेंज है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसमें रोड्स भी हैं सर, जिसमें रेलवे का नेटवर्क भी है। अभी भी इतने साल आजादी के बाद में भी 3 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं राजस्थान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड से रेल से अभी तक नहीं जुड़े, और 2 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है वो किसी भी स्टेट या नेशनल हाईवे से नहीं जुड़े हुए। तो ये कुछ चैलेंज है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, जहां दूसरा जो डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है। जैसे जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो जैसे एक इलेक्शन बूथ से अगर किसी ईआरओ को देखना है तो दूसरे इलेक्शन बूथ पर जाने में उसको या अपने एरिया में घूमने में भी उसको 10 घंटे, एक एरिया से जाने में, एक एसडीएम को एक गांव से दूसरे गांव जाने में 10 घंटे लगते हैं, या उसे ओवरनाइट स्टे करना पड़ता है। क्योंकि ये डिस्टेंस जो है वो जैसे स्कूल है, हॉस्पिटल्स हैं, तो अभी बीकानेर की बात करें तो रूरल एरिया से सुबह एक बस निकलती है मोस्टली सभी गांवों से, सुबह 8-9 बजे के बीच में, जो 10 से 11 बजे के बीच में सिटी में पहुंचती हैं, और वहां वो अपनी फैसिलिटी को जो भी यूज करनी है, भले स्कूल है या पोस्ट ऑफिस है या हॉस्पिटल है या स्पेशलाइज कोई सर्विसेज उन्हें करवानी है, बैंकिंग से रिलेटेड है कोई काम है, डीडी या आरटीजीएस ही करवाना है, तो उसके बाद में शाम को वही बस जाएगी जो उन्हें गांव छोड़ेगी। अगर वो बस मिस हो गई तो वो उनके पास में कोई विकल्प नहीं है, उन्हें कहीं ना कहीं अपनी रात गुजारनी पड़ेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सब रेल का नेटवर्क या इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। बीकानेर सिटी में सिर्फ बीकानेर ही है जो वेल कनेक्टेड है, और अदरवाइज बाकी जितने रूरल एरिया हैं उनकी कनेक्टिविटी काफी पुअर हुई है। एक जो चैलेंज के साथ में एक मेजर बात भी मैं ऐड करूंगा कि चूंकि पॉपुलेशन कम है, लैंड बैरन पड़ी है, तो इस वजह से सोलर इन्वेस्टमेंट के लिए ये जो वेस्टर्न राजस्थान है एक हब बना है, क्योंकि लैंड बैरन है, उसमें कोई यूज नहीं आ रहा था। तो जो सोइल से प्रोडक्शन कल्टीवेटेड लैंड में हो रहा था वो प्रोडक्शन यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, लेकिन उसमें भी चैलेंज है कि जहाँ ग्रिड सबस्टेशन, बड़े ग्रिड सबस्टेशन जीएसएस नहीं है, वहां सोलर के हब नहीं लग पाते, क्योंकि लाइट बना तो लेंगे, उसको बना के ग्रिड में डालना और ग्रिड से ट्रांसपोर्टेशन करके वहां तक ले जाना जहां उसका कंजम्पशन है, तो वो भी सिर्फ एक पैचेज में डेवलप हुए हैं। तो वो भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है कि बिजली को लेकर जाना, प्रोडक्शन तो पॉसिबल है पर उसको ले जाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। जैसे जैसे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है उसमें सोलर प्रोडक्शन जो है, जो एग्रीकल्चर की जगह प्रोड्यूस शुरू हुआ है, बट बेसिक जो प्रॉब्लम है वो अंडरग्राउंड वाटर की, और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस चैलेंज को हम फेस कर रहे हैं। धन्यवाद। मिस्टर हिरानी। Yeah, can you please repeat? Yeah, so I was talking about the challenges that are still being faced by the districts, the residual challenges. So how is it that India is going to become $26 trillion economy without districts actively participating in it and still struggling with the existing challenges? I believe the answer to this lies in the developmental model which we are approaching, and I might sound quite disruptive, and all my colleagues here would agree to me that the developmental arena in which we work in, we believe in equity of distribution, we believe in equity of access, and these have constitutional validity as well. But over a period of time, lot of focus has been attached on quantitative assessment of our works rather than qualitative. Various attempts were made, social audit, environmental impact assessment, to have a qualitative assessment of our interventions, but they too are not able to bring out the correct picture of the qualitative impact of the administration.
in today's scenario, if I put out that any district magistrate, अगर उनके पास एक allocation आता है, let's say from the animal husbandry department of distributing a certain amount of goods in the district to the eligible beneficiaries, the first thought which comes into mind is to divide it by the total number of blocks in the district. Now this developmental formula is a safe formula. It is politically correct, and it will sort of bring a sense of equity that yes, everything is neutral in our eyes. But because of such minute interventions over a long period of time, the impact is very late and the assessment is more or less absent. If this paradigm is changed, and if we look at administration as a project-based administration, wherein we take up a project and the boundary must be a subset of the district boundary. If we look at the if we transform our vision of administration as a project-based administration specific to a certain area of the district, I think the impact created would be, number one, faster, and number two, it would be very easy to assess. So from time immemorial, it has been advocated that the efficiency in the present administration arena should be increased, and some aspects of private workings can be adopted. I think this project-based management of various schemes in a particular district should be promoted, and the district magistrates can be given a free hand so that they can try. Of course, they'll fail in some places, but if some models come out successful, then these can be replicated across the country, and it can result into something which the present model is not able to give. So this, I believe, our vision of how administration should be, if it is tweaked a little bit, I think we can get a better results. Well, thank you so much. In fact, we have inputs on 3 different counts, and this is all the time that we have for the discussion. We'll have to wind it up. But before we go, let me sum up. There are challenges which the districts face, particularly at the infrastructure level, wherein the essential things like water and roads, which is the infrastructure, that remains a big challenge, which hampers the growth of the districts. And this is further compounded by widespread migration that happens as a result of lack of employment opportunities. So, what we've been discussing, harnessing the demographic dividend, while we do have an advantage, that becomes a burden. So in order to avoid that, I think further thought needs to be given. Departments still, it is believed, as suggested by the panel, mostly work in silos. So India's governance model that has evolved over a period of time has mostly been looking at bursting the silos, which is what has always been an ill. But still, it so seems that at the district level, the challenges towards that remain. As far as taking the industry to the villages and deeper into the districts, so that they could create more and more employment opportunities. Example given of the solar integration. So the plants have been set up, but there is no direct grid connectivity for export. So that also remains limited. So good amount of planning and execution probably is required across whatever industries that are there. And it is also suggested that we need to look at more of qualitative assessment rather than quantitative assessment. And the DMs need to be given a free hand into the implementation of various projects. The project-based administration and monitoring is extremely important, because that way one will be able to assess the outcomes of all the implementations, and perhaps that will also save time, energy, and money, and possible correctives can be applied on the way.
So with this, I thank all the panelists from District Administration, Mr. Bhagora, Mr. Hirani, as well as Mr. Yashpal Ahuja. Thank you very much for being with us. Thank you.